Hello everyone, I welcome you all to our English classes for class 10, and today we are going to read writing section, and the part of writing section, letter writing. Now in letter writing also we have different forms of letter. Yes, today we are going to read inquiry letter. What is inquiry? Yes, these are written to an organization or any institution when an individual or any other organization wants to inquire about something based on which a business deal can be initiated. Is it clear? Inquiry means पूछताछ. The more you will read, the more you will gain. So my suggestion for you, keep reading and gain your ideas. Now this inquiry letter is a part of formal letters. Now what is formal letter? A formal letter is one that is written for official purpose. Letters written for school leave and other offices are official letters. Such an example we are talking about inquiry letter. So for example, Mr. Sudhir wants to go to Jaipur with his family by car. Thus, he decides to write a letter of inquiry to Guild Travels and Tourism, inquiring about the availability of a car, the types of car available, charges, night charges, if any, driver charges, etc. मतलब पूछताछ करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट लोकेशन जो पूछताछ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्वायरी. और यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? इंक्वायरी लेटर. किस तरीके से एक लेटर फॉर्म किया जाता है किसी भी चीज की जानकारी पाने के लिए. Writing a letter of inquiry has a proper structure as it comes in the category of formal letters. Here is the entire structure explained point by point. So listen it carefully, students. The letter starts with the address of the sender. After adding the address, leave some space and add the date. Then add the address of the receiver. Now add the subject of the letter. Keep it clear and precise. Subject should give a clear idea of what you are going to discuss in the letter. Add salutation, which is an important part of the letter. Otherwise, the letter appears to be rude. Then comes the main body of the letter. Avoid writing long paragraphs. Always bifurcate body into 3-4 paragraphs. In paragraph 1, explain yourself. Also explain the reason behind writing a letter. Then in paragraph 2, explain the inquiry details. And para 3 should be a closing one, asking for a response in gentle words. And by writing your name and designation, let us see the format and solve example of inquiry letter, which will help you to clear your concept. Let us talk about the format: address, city, leave one line, date, then the manager, tour and travel corporation, city, subject. Once again, address. So what is address? Sender address. Either you are the sender or the question, the sender name is address. Okay. Then you will leave one line, students, and then you will come to the date. Now date, 2 patterns, either American or British. Then again leave one line. Then we are coming to the manager, name of the head of the organization, tour and travel corporation, name of the organization. Next, city. Suppose you are talking about your school. Take an example of your school. तो अगर आप अपने स्कूल के ऊपर लिख रहे हो, आपको अपने स्कूल की प्रोस्पेक्टस चाहिए और एक नया एडमिशन है, तो आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे. यस. तो सबसे पहले नेम ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन हुआ? आपके मैनेजर हुए, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर. यस. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रेडियंस एंड चिल्ड्रन
क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फिर हम क्या आएंगे, सिटी का नाम डालेंगे। अब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सब्जेक्ट में ही कंफ्यूज रहते हो कि हम सब्जेक्ट कैसे लिखें, जबकि सब्जेक्ट सबसे इजी होता है, वो क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। अब आपको बस क्या लगाना है, इंक्वायरी अबाउट गैस। गैस मीन्स जो क्वेश्चन में है, किस चीज के ऊपर इंक्वायरी करनी है, आपको बस वही चीज यहाँ पे डालनी है, इंक्वायरी अबाउट दिस और दैट। ठीक है, सर or madam, your salutation, you have to respect the person whom you are writing. So first paragraph, introduce yourself, introduce your reputation, mention who recommended the company, such as we are one of the leading school in Delhi and have over 10 branches in North India. Your firm is known for its best service and was recommended to us by Mr. XYZ, principal of XYZ school. So ध्यान से देखोगे तो introduce yourself, अपने आप को इंट्रोड्यूस आपने किया इस लाइन्स में, we are one of the leading school. Introduce your reputation, चाहे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आप ये हो, यहाँ पढ़ते हो, या फिर अपने रेपुटेशन को, अपने स्टेटस को आपने इंट्रोड्यूस किया। फिर आता है मेंशन हु रिकमेंडेड, आपको किसने बताया। तो ये लाइन अगर आप देखते हो तो ये लाइन आप हर लेटर में डाल सकते हो। वी आर, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा सब्जेक्ट। वी आर वन ऑफ द लीडिंग स्कूल इन दिल्ली एंड हैव ओवर 10 ब्रांचेस इन नॉर्थ इंडिया. योर फर्म इज नोन फॉर इट्स बेस्ट सर्विस एंड वाज रिकमेंडेड टू अस बाय मिस्टर XYZ, प्रिंसिपल ऑफ XYZ स्कूल. क्लियर? सेकंड पैराग्राफ, टेल योर रिक्वायरमेंट. आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ, आपको क्या चाहिए, किस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं। सपोज आप ट्रैवल एंड टूर एजेंट को आप लिख रहे हो, जैसे कि हमने एग्जांपल में फॉर्मेट में डाला है, तो आप ट्रैवल एजेंट को लिख रहे हो तो आप क्या पूछोगे, डेस्टिनेशन यू वांट टू विजिट, आप कहाँ कहाँ घूमोगे। अगर उनकी कार आप बुक करते हो तो वो कार आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा। यस, स्टार्ट एंड डेट, और कब से स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं पूछताछ। सेकंड पैराग्राफ में इट शुड इंक्लूड द मैटर इन डिटेल, मतलब वो चीज को जो भी आप पूछना चाहते हो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना। क्लियर? थर्ड पैराग्राफ, हियर यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर बाय मेंशनिंग द कंक्लूजन और सॉल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, thanking you, yours faithfully, yours sincerely, sender's name, signature and designation if applicable. ठीक है, क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है, थैंक यू बोलना है, yours faithfully या तो sincerely, सेंडर का नाम बता दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, डेजिग्नेशन दैट मींस अपना पोस्ट। टॉपिक्स फॉर इंक्वायरी, अब इंक्वायरी में क्या क्या आ सकता है, asking about the details, taking admission in a course, inquiry about some welfare scheme launched by government, writing to a tourism company to inquire about the details of some tour package. ये सारी चीजें जो है ये आपके क्वेश्चन में आ सकती है। अब सबसे पहले मार्किंग के फॉर्मेट 1 marks, कंटेंट 2 marks, एक्सप्रेशन 3 marks. Under content, credit should be given for candidates' creativity in presentation of the idea, appropriate use of language, skill of listening. अब आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, तो ये क्राइटेरिया आप देख लो, इससे आपको क्लियर होगा कि आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है और लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना। द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, ये भी एक कला है, लिखना एक कला है। So this is a very wonderful art of letter writing. Let us say, students, one more example. Sender address 55A Green Enclave Model Town, Lucknow. Read one line, date December 2018. Then again leave line, the director, National Science Center, Anand Vihar, Lucknow. Subject,
inquiry to join astronomy club. So that means as students who are inquiring. Sir, with reference to the astronomy club that is going to start by National Science Center in Lucknow in fortnight, I wish to join the club. I am a student of Vidyanjali Public School, Lucknow, studying in 10th class. I have a very keen interest in astronomy. I wish to join ISRO when I grow up. I have written to your esteemed self to know a few details of the club as mentioned below. First, venue. Second, duration. Third, fee structure. Fourth, activities. Fifth, transportation. So these are the points on the basis of which you want the inquiry. I shall be very grateful if you provide me with the above mentioned details so that I can do the formalities to join the club. Looking forward to your prompt response. Thanking you. Yours faithfully, something. So students, अगर इस लेटर को आप ध्यान से देखते हो तो क्या करना है, आपको इंक्वायरी करना है ना, एस्ट्रोनॉमी क्लब के ऊपर। तो एस्ट्रोनॉमी क्लब में आप क्या क्या इंक्वायरी करोगे? पहले तो आपने अपने डिटेल्स बताए, आप कौन हो, कहाँ पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, आप क्यों इंटरेस्टेड हो, है ना। उसके बाद आपने क्या पूछा? वेन्यू पूछा, ड्यूरेशन पूछा, कितने मंथ का कोर्स है, फीस के बारे में पूछा, एक्टिविटीज पूछी क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पूछा आपने, बस फैसिलिटी है या नहीं, और लास्ट में आपने क्या बोला कि आप बहुत थैंकफुल होंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट के अगर वो आपको सारी डिटेल्स टाइम पे पहुंचा दें। और आप किस वजह से वेट कर रहे हो? आप वेट कर रहे हो उनके रेस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, this was the inquiry letter. Now I hope you will do an inquiry letter by your own. So now I am going to give you a question as your homework, which you need to give the answer correct. So your homework question is given on the slide. Note it down and do it correctly. Thank you. Stay home and stay safe.